Licensing process of any country is a little bit complex and complicated for the international students. There are three most important reasons that is complicated because the licensing process for the domestic students is different than the local students. Second is there are multiple agencies are involved in the licensing process. And third is licensing information is not available at the one stop. So you have to review everything from the different areas. That's why that is the more complex and complicated. But you don't need to worry about it because today we are going to discuss about the 14 unique steps to become registered pharmacist in Australia in detail. So let's jump into the lecture, and that will cover all the 14 steps to how to become the registered pharmacist in Australia. That is a step-by-step guide that will change your entire perceptions and understanding about the licensing process. आज हम बात करेंगे 14 steps licensing process of Australia. In today's class, we are going to discuss about each and every steps that is going to help you to achieve your pharmacist licensing process in Australia. Each and every 16 steps are going to be explained in details, and also we are going to discuss about the key elements that you have to keep in mind while you are preparing for your licensing process of Australia. So let's start. Today's class has been divided into 6 different agendas are going to be discussed. The first point that is important for each and every students that should have to learn and understand is what are the regulatory agencies involved in the licensing process in Australia. The second is we are going to discuss about the skill assessment process. And third is comprehensive overview of the licensing exams. Then we discuss about the each and every steps in the flow format, so you can make up and you can understand the entire roadmap to become the registered pharmacist in Australia. And also we are going to discuss about the how much total investment you are going to make to become the registered pharmacist. And finally, some of the downloadable resources you will get at the end, so you can use that resources for your references and also for mapping your licensing process. Okay, so let's jump into the first point, that is the 3 different organizations are responsible for maintaining the entire pharmacist licensing process in Australia. The first organization is the Australian Pharmacy Council. This Australian Pharmacy Council is responsible for conducting your examinations, and also that is responsible for completion of your document evaluation and assessment. तो APC का जो पूरा काम है वो है आपकी असेसमेंट करना और आपकी एग्ज़ाम को कंडक्ट करना. उसके बाद आपकी लाइसेंसिंग प्रोसेस को मेंटेन करने का काम इस फार्मेसी बोर्ड का है. Thus, the Australian Pharmacy Board is responsible for maintaining your pharmacist license, and that is a federal agency, so your license is maintained all across the Australia. And another agency is APRA, that's the Australian Health Practitioner Regulations Agencies. In these agencies, that is association of all the healthcare professionals at the one center point. That means आपका जो लाइसेंस है वो आपके फार्मेसी बोर्ड ही मैनेज करेगी, पर आप APRA की वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे जा सकते हो और आपकी पूरी प्रोसेस कर सकते हो. तो मेनली 3 रेगुलेटरी एजेंसीज है, पर आपको समझने के लिए 2 इम्पोर्टेंट है. वन इज APC एंड अदर वन इज अ फार्मेसी बोर्ड. तो दोनों के रोल समझना जरूरी है और दोनों का काम समझना जरूरी है. APC एग्जाम्स कंडक्ट करेगी और बोर्ड आपकी लाइसेंस को मेंटेन करेगा. तो आपको हर बार लाइसेंस रिन्यू के लिए ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी बोर्ड के पास जाना है. ओके, सो किसी भी देश की लाइसेंसिंग प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक एंड फंडामेंटल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स होती है. उसके पीछे 3 डिफरेंट रीजंस है. सबसे पहला रीज़न ये है कि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैज़ टू फॉलो द डिफरेंट प्रोसेस एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट हैज़ टू फॉलो द डिफरेंट प्रोसेस. तो इसीलिए ज़्यादातर एजेंसीज आपको जो बताएगी वो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की प्रोसेस को बताएगी, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड डोमेस्टिक्स का डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स फील हो सकता है। दूसरा, अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल इन्वॉल्व होती है, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी बोर्ड इन्वॉल्व होता है, तो आपको सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं मिल सकती है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स होने की प्रोबेबिलिटी है, पर डोंट वरी अबाउट इट। आज की जो ये वीडियो है, आज का जो ये क्लास है, दैट इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। सो ब्रॉडली हम लाइसेंसिंग प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट नंबर 1 इज कॉल्ड द स्किल असेसमेंट एंड पार्ट नंबर 2 इज कॉल्ड द जनरल फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग प्रोसेस। तो स्किल असेसमेंट का जो स्टेप्स है दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। स्किल असेसमेंट की प्रोसेस में हमें समझना जरूरी है कि अलग अलग लोगों की स्किल असेसमेंट अलग अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहला स्टेप्स अभी हम समझेंगे स्किल असेसमेंट के बारे में। तो स्किल असेसमेंट 4 अलग अलग टाइप की स्किल असेसमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कि पहली स्किल असेसमेंट इज दोज हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। समझना बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप। अगर इंडियन सिटीजन है और उसने अपनी बैचलर ऑफ फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट। ओके, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है पर उसने अपनी पढ़ाई इंडिया से की है बी फार्मा, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्ट्रीम। सेकेंड इज न्यूजीलैंड रजिस्टर्ड फार्मेसी स्ट्रीम। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। दैट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज हेल्पिंग द फार्मासिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट फ्रीली कैन वर्क इन न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड फार्मासिस्ट कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। थर्ड इज called competency stream. That's a competency stream is specially for those who have done their Bachelor of Pharmacy or PharmD from Canada, UK, USA। अगर ये किसी कंट्री में से अपनी बी फार्मा या तो फार्मडी कंप्लीट की है तो वो स्टूडेंट्स COPS स्ट्रीम के अंतर्गत अपनी स्किल असेसमेंट करवाएंगे। लेकिन हम लोगों के लिए खास करके other than these 3 categories, all other students comes under the category is called the knowledge stream or KAPS stream। तो अगर हम समझे कि इंडियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टूडेंट्स दे फॉल अंडर द नॉलेज स्ट्रीम प्रोसेस। तो स्किल असेसमेंट का हमारा जो टाइप है वो है नॉलेज स्ट्रीम प्रोसेस। वहाँ से आगे चलते हैं। नॉलेज स्ट्रीम प्रोसेस को हम स्ट्रीम ए प्रोसेस कहते हैं। स्ट्रीम ए प्रोसेस करने के 2 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज इज डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। जैसे ही हम ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तब जाके हमारा असेसमेंट कंप्लीट होगा। एंड दिस कंप्लीट असेसमेंट इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। अब ये पॉजिटिव स्किल असेसमेंट में सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस करनी है, उसके बाद हमें KAPS एग्ज़ाम लिखना है। ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वी आर गोइंग टू बिकम इक्विवेलेंट टू द ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट। तो ऑस्ट्रेलिया में जिसने अपनी ग्रेजुएशन की है ऐसे बच्चों को ये प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जिसने आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया खास करके इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अदर कंट्रीज में से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, दोज हु हैव टू फॉलो दिस 2 स्टेप्स। सो लेट्स वी जंप इनटू द डॉक्यूमेंट evaluation process first and then we can jump into the KAPS examination process। ओके, तो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस को समझने से पहले आपके दिमाग में ये 5 क्वेश्चंस होना बहुत ही ज़रूरी है और ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना भी ज़रूरी है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। सबसे पहले व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, सेकंड इज़ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस, ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, उसकी फ़ीस कितनी है, उसका ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा असेसमेंट करने के लिए, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स शुड आई हैव टू सबमिट फॉर माय इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो
एप्लीकेशन प्रोसेस जो है दैट इज़ ए ऑनलाइन प्रोसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड मीट टू यूनिक थिंग्स. One is 4 years Bachelor of Pharmacy. That means all pharmacy graduates are eligible to complete their document evaluation process. 4 साल का बी फार्मा चाहिए, फिर फार्म डी किया हो, एम फार्म किया हो या बी फार्म किया हो, एवरीबॉडी इज एलिजिबल टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. Second important चीज is your degree should make you eligible to work as a pharmacist in your home country. मतलब आप इंडिया में से फार्मेसी पढ़े हो तो आपके देश में आप एज ए फार्मासिस्ट काम करने की एबिलिटी रखते हो और आपकी डिग्री आपको ये अलाउड करती है. ये दो चीज़ें ज़रूरी बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे इंडिया में आज तो खैर सारी ही कॉलेजेस पीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड है. अगर आपने बी फार्मा किया है और आपकी कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड नहीं है तो आप बी फार्मा तो हो पर इंडिया में आप लाइसेंस नहीं ले सकते हो, क्योंकि पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में से पढ़े हुए बच्चे ही फार्मासिस्ट का लाइसेंस ले सकते हैं. तो 99% सारी कॉलेजेस पीसीआई अप्रूव्ड ही है, इसीलिए ये दोनों ही प्रोसेस आप इजीली मैनेज कर लोगे, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते. सीधा सीधा समझो 4 years बैचलर ऑफ फार्मेसी इज रिक्वायर्ड टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. ये एलिजिबल है. उसका फीस बहुत ही सिंपल, $1,310. दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट यू हैव टू invest for your document evaluation process. This is the one time process. और जब भी आप ये प्रोसेस करते हो मेक श्योर कर लीजिए कि आप फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर जाके ये फीस को चेक कर लेना जरूरी है. ओके जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो एक्सपेक्ट कीजिए कि अराउंड अबाउट 3 months टाइम विल टेक टू गेट योर असेसमेंट लेटर. जैसे डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की प्रोसेस कंप्लीट कर दी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी, फीस पेमेंट हो गया, एवरीथिंग हैज़ बीन डन, इट विल टेक अबाउट 3 months टाइम टू गेट योर लेटर ऑफ अप्रूवल. आफ्टर दिस 3 months यू विल गेट योर कंप्लीशन लेटर. पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो नॉर्मली documents can be divided in two groups. One is mandatory documents and other one is optional documents. Mandatory documents, that means everybody has to submit these documents. Optional documents might be some circumstances are changed and you have to provide additional documents. Mandatory documents में the passport is very important. Official photo bearing documents, that means Aadhaar card you can use, driving license you can use. Okay, so these kind of documents should be submit. Birth certificate, okay, course completion or qualification certification is required, academic transcript is required, and evidence of registration, that means good standing certificate. Your respective state pharmacy council is going to provide you the evidence of registration as a good standing certificate. They are directly send it to the फार्मेसी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल को भेज देंगे. तो ये डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. ऑनलाइन पोर्टल में जाना है, एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, सबमिट ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, फिल आउट द ऑनलाइन फॉर्म, मेक ए फीस पेमेंट एंड यू विल ओके विथ एवरीथिंग. ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो दे हैव टू सबमिट द एविडेंस ऑफ फार्मासिस्ट वर्क एक्सपीरियंस. आपकी अगर वर्क एक्सपीरियंस है, आप कुछ एड ऑन करना चाहते हो तो आपके रिज्यूमे एंड करिकुलम विटे आप भेज सकते हो. अगर आपने किसी को एजेंट अपॉइंट किया है तो एजेंट ऑथोराइजेशन फॉर्म्स भी सबमिट कर सकते हो. और आप एविडेंस ऑफ नेम चेंज, अगर आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में और आपके आईडी प्रूफ के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर नाम में चेंज है तो एविडेंस ऑफ नेम चेंज सबमिट करना जरूरी है. ये खास करके किसके रिलेवेंसी में आएगा? मैरिड फीमेल के
केस में ये बहुत ही रिलेवेंट होगा, क्योंकि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे आपका मैरिज से पहले का नाम होगा और आपकी जो पासपोर्ट या तो आपके जो आईडी डॉक्यूमेंट्स है उसमें मैरिज के बाद का नाम होगा, तो नेम चेंज डॉक्यूमेंट्स बिकम मैंडेटरी. ओके, नाउ after completion of everything you will get your stream A approval letter. ये लेटर अभी आपके पास पहुंच चुका है. ये लेटर के बारे में 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. Okay, completion of your entire process, you will get the confirmation of stream A letter that is valid for lifelong. stream A letter की validity lifelong है. उसके बाद once you get the stream A letter, now you move to the step number 2, that is the KAPS exam registration process. Now you have to start registering yourself for the KAPS examination. Okay, this is the stream A approval letter can help you to move on. जैसे आपके पास अभी स्ट्रीम में लेटर आ गया है, नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग योर KAPS एग्जाम रजिस्ट्रेशन. दिस एग्जाम रजिस्ट्रेशन इज online application. You have to submit your online application. They are strongly recommending you have to submit this application at least 2 to 3 months before the upcoming exams. That means when you are making up your mind, making up your plan, always you have to be well in advance, because about 3 months times take to receive your stream A letters, and also 2 to 3 months you have to book your exam in advance. That means about 5 to 6 months before your examination you have to plan for your upcoming exams scheduling. Okay. उसके बाद KPS एग्ज़ाम्स के कुछ की पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, पर आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है. उसके डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कि KPS exam guide, that KPS exam guide, each and every points about the KPS exam has been explained in that particular video. So ये वीडियो को हम प्रोसेस फ्लो के लिए रखते हैं, और KPS exam guide is dedicated only for the KPS exam related points. Okay, so you can get the detailed information. That's why you have to watch that video as well. Okay, let's 3 important points. One is the cost of the KPS exam is $2,230. You have to pay for your KPS exam fees. This exam fees is you have to make a payment every time when you are booking for exam. मान लीजिए कि पहली बार आपने एग्ज़ाम लिखी, आप फेल हुए, दूसरी बार लिखोगे तो आपको ये पेमेंट करना है, जबकि वो आपका असेसमेंट का पेमेंट एक ही बार करना था. दैट वाज अ वन टाइम पेमेंट. दिस इज एवरी अटेम्प्ट यू हैव टू मेक अ पेमेंट. द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज KPS एग्जाम साल में 3 बार होती है. दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड एडवांटेज टू गेट इन टू द लाइसेंसिंग प्रोसेस इन ऑस्ट्रेलिया. तीसरा जो पॉइंट है वो एग्ज़ाम आप इंडिया से लिख सकते हो. इंडिया में बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स है, ताकि आप KPS एग्ज़ाम लिखने के लिए बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, पुणे एंड नोएडा, all these exam centers are available, so you can write down this exam from any of these centers. Okay, ये 3 पॉइंट्स अभी के लिए इम्पोर्टेंट है. बाकी डिटेल्स में आप KPS एग्ज़ाम गाइड की वीडियो में से देख सकते हो. इमेजिन कीजिए कि यू हैव कंप्लीटेड योर असेसमेंट, डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन डन हो गया, आपकी KPS एग्जाम डन हो गई. ये कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट अ पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेटर. Now this positive skill assessment letter is going to make you equivalent to the Australian graduates. Now you are equivalent to the Australian graduates. अब आपके और ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, जैसे ही आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेटर आ गया, उसके बाद यू हैव टू साइमल्टेनियसली स्टार्ट द 4 डिफरेंट स्टेप्स. इमेजिन कीजिए कि आपने ये एग्ज़ाम इंडिया से लिखी है, आपने ये एग्ज़ाम पास कर ली, अब आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करना है. Step number 1, start preparing for English proficiency test and demonstrate your English proficiency.
As a pharmacist, when you are going to work as a pharmacist, always you are going to use your best communication skills, because majority of the patients are elderly patients or disabled patients. So pharmacists must have to be good in their language proficiency. So start for language proficiency test. Second is you have to start searching for the internship. तो ये सारी चीज़ आप इंडिया में बैठ के करना है, कर सकते हो। इंडिया में बैठ के आप इंटर्नशिप को सर्च करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपको इंटर्नशिप अप्रूव मिल जाती है तो उसको अप्रूव भी करवा सकते हैं। उसके बाद प्रोविजनल फार्मासिस्ट लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन भी इंडिया से भेज सकते हो। एंड फोर्थ इज दैट पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेटर जो आपको मिला है, दैट यूज फॉर योर इमिग्रेशन पर्पज। That means on based upon that assessment letter, you are going to directly get migration to Australia for intern visa or direct immigration. ओके तो ये चार चीज़ों को पैरेलली काम स्टार्ट करना है, और ये प्रोजेक्ट्स एक एक के साथ एक को अलाइन करके करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। For immigration, you have to contact the immigration experts or immigration lawyer, but in Australia, there are various different subclasses of immigrations are available, and as a positive skill assessment pharmacist, you are considering as a community pharmacist or hospital pharmacist. Community and hospital pharmacist is good in demand, and you are more likely to get the immigration of the state sponsorship, skilled nominations. There are various kind of options are available, and also you have an option of the training visa 407 to go to Australia and complete your internship. Okay, so that is the positive point of passing the KPS exam from India. Now jump into the each and every elements and segment little bit in detail so you can get the better understanding. First we have to understand what is the English requirement. तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करवा दूँ। सबसे पहले KPS एग्ज़ाम लिखने के समय आपको IELTS या तो कोई इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही KPS पास कर लिया उसके बाद आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी है। That English proficiency can be proven by 4 different kind of tests. One is IELTS. IELTS में आपको सिंगल टेस्ट में 7 बैंड नॉट लेस देन 7 स्कोर करना है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास एग्जाम का है, दैट इज OET, ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्ट। दिस ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्ट इज वैलिड इन 3 कंट्रीज, कनाडा में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके, ये 3 देशों में OET वैलिड है। OET में आपको 20 स्कोर करना है, एंड OET एग्जाम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अपनी जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है उसमें जिस तरह से उसको स्किल्स को यूटिलाइज करना है, दैट वे दे आर टेस्टिंग द एग्जाम्स। इट्स लिटिल बिट easy or comfortable exam. Third is you can take the PTE, Pearson Test of English. उसमें you have to score 65 in each 4 modules. Or you can give the TOEFL IBT. TOEFL IBT, listening 24, reading 24, writing 27, and your speaking 23. That is the accepted standards of your English proficiency test by the Pharmacy Board of Australia. They are expecting any of these 4 language tests. Once you complete your language test, now you are getting into the registration process. That's called the provisional pharmacist registration. That's the provisional pharmacist registration. You need KPS pass, language requirement done. You can apply for provisional pharmacist registration process. Once you get your provisional pharmacist registration, simultaneously you have organized your internship approval and everything. You can start doing your internship. This is a very straightforward process. Internship approval process, search for internship location. You can work as an intern in hospitals or in community pharmacy.
Once you have find out your internship location sites, then you have to get that approved by the PBA, Pharmacy Board of Australia. The board is going to approve your internship sites. They are going to give you the green signal. You have received your provisional pharmacist registration and your internship approval. Now you can start doing your internship and start working as an intern pharmacist. This is the process. Before this point, everything you can sort it out from India. Not only India, but any other country also you can sort it out this process. Now, for working as an intern, you must have to migrate to Australia, and from that point onwards, you can start working as a pharmacist as an intern pharmacist in Australia. Okay, now the final 4 steps you have to follow to become the registered pharmacist in Australia. The step number 1 is you have to start doing your internship of 1,824 hours of internship is required. 1,824 hours of internship. After joining your internship, you have to register for inter training program that approved by the Australian Pharmacy Council. You have to complete. There are 6 different providers are there, and you have to choose any of that training providers, and you have to enroll for that online program. That's the inter training program you have to do simultaneous with your internship. And once you complete the 75% of your internship, you are eligible to sit for the written exam. Okay, that means the 1,368 hours of your internship has been completed. Now you can sit for your intern written exam, and at the same time you can sit for your intern oral exam as well. So we have prepared a different, very dedicated and specific video for what next after passing KAPS exam. So you can go through that video, and in that video lectures we have explained each and every steps in details, so you can get the better understanding of after passing your KAPS exam, what are the steps, what the syllabus of your written exams, what syllabus of your oral exam, how the oral exam is structured, how the written exam is structured, what are the approved sites for your intern training program. Everything has been explained in that video. So I am going to provide you the link of that video in the description box, so you can go through and you can join that video lecture as well. Okay, so after completion of these 4 steps, you are ready to rock as a general pharmacist registration process, and you can start working as a registered pharmacist in Australia, and you can enjoy your life. Okay, so quickly I can give you the process steps. This is a checklist. So this checklist is available in a download, so you can go through the description box. I'm going to send you the link of this checklist and the total investment process and key takeaways. So these 3 things is going to be available in your downloads. Okay, and that will be your handy reference to understand all the 14 different steps. I can quickly go through all the steps. The first point is apply for the assessment. After assessment, you will get the stream approval letter. Then go for the KAPS exam registration. Sit for the KAPS exam. Once you pass the exam, you get the positive skill assessment. Start doing your immigration process. Start the English proficiency test. Apply for the provisional registration. Get approval of your internship sites, and then start doing your internship. Once you start doing internship, start your inter training program at the approved sites, and then you like 75% of your internship completion, you can sit for the written exam, oral exam, pass these exams, and become the registered pharmacist. That's the straightforward 14-step licensing process of Australia. The total investment is about $7,087. These are the different charges you are going to make a payment, and what the authority is responsible for that particular steps or that particular process. And
This $7,087 is equivalent to about 3 to 4 weeks of your income as a pharmacist. So don't look at it as very expensive, okay? Like for example, if you become the registered pharmacist, start working, at least you are going to make $50 to $60 per hour, and this $50 to $60 per hour is nothing but 3 to 4 weeks of your earnings. That is enough for getting the pharmacist license in Australia. Okay, some of the key points you have to keep in mind. So this is in a final conclusion. The KPS exam is 3 times in a year: March, July, and November. Second is no IELTS required for KPS exam. Third is 4-year Bachelor of Pharmacy is valid. So all pharmacy students are eligible for the KPS exam and take exam from India, and unlimited attempts for the KPS exam. So these are the 5 key points you must have to keep in mind. Okay, thank you very much. And if you like this video, you can subscribe our YouTube channel, and also you can join the PharmaVision community to update yourself about upcoming pharmacy opportunities, and also you can brush up your knowledge about the pharmacy career.